Hi guys, welcome to the Infopedia. A few years ago, if we needed something, we had to step out and buy from the shop. But now, everything available at our fingertips. But have you wondered how and why this company bears all such costs to give us so much convenience? Heavy discount देना, door to door delivery करना, टेक्नोलॉजी पे खर्चा करना यह कंपनी के लिए कॉस्ट है एंड मोस्ट ऑफ दिस कंपनी bears losses. बिजनेस में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, ये हम समझते थे. बट ये हर सिनारियो में एंड एवरी कंपनी इसको एप्लीकेबल नहीं है. मेकिंग लॉसेस इज नाउ अ ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉर मोस्ट ऑफ द ई-कॉमर्स एंड डिलीवरी इंडस्ट्री एंड नाउ वी विल अनकवर this growth over profit making strategy. The main goal of this strategy is not the immediate profit but build market dominance. This strategy is divided into three pillars. The first pillar is about market dominance. The aim is to create a market share, create a customer loyalty and build a heavy barrier for the new entrants. जितना customer volume रहेगा उतना brand value रहेगा. This is the mantra of this strategy. In early stages, most of the gives a lot of freebies like heavy discount, free delivery, cashback are the tools for changing customer habit. They are essentially paying for you to use their services. This isn't a charity but designed to create a market share. Investors are the important factor for this first pillar. Without this, these companies can't even survive. Venture capital and private investors are fund their operation. These investors aren't looking for the quick profit but capital appreciations in long term after creating a brand value. After creating brand value, they earn by selling their shares in the IPO or selling their brand with other big brand. और ये अपने इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट्स में 10x टाइम और समटाइम इवन 100 टाइम्स कमाते हैं. Now the second pillar, that is building the network. After creating the brand value, इनका second step है कि एक strong network create करना, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना जिससे दूसरे कॉम्पिटिटर को एंट्री करना ही डिफिकल्ट हो जाए. Creating one stop for everything. This is achieved through the multi-program approach. They invested heavily in technology and investment and don't focus only on their offering but create the whole ecosystem and ensures that the customer addicted to their services. For example, Swiggy and Zomato. Earlier they were the delivery apps. After some time they provide a loyalty program, then the dining services और अभी even groceries भी sell कर रहे हैं. So that is the market expansion. Now this is the third pillar, that is path to profit. This is the most important pillar in this strategy. एक बार कस्टमर बेस एंड कनेक्शन बनाने के बाद मार्केट एक्सपेंशन करने के बाद ये कंपनीज इनकम अर्न करने के स्टेप्स लेते हैं. दे डू दिस बाय रिड्यूसिंग द डिस्काउंट, चार्जिंग द डिलीवरी फीस, एडिंग द हैंडलिंग चार्जेस एंड चार्जिंग द हायर कमीशन टू द B2B बिजनेस फॉर द एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांड एंडोर्समेंट. सो कंपनीज जानते हैं कि कस्टमर उनके सर्विसेज से एडिक्ट हो चुके हैं एंड नाउ दे कैन गेट अ बेनिफिट फ्रॉम दिस. दैट्स द स्ट्रेटजी ऑफ द लॉस मेकिंग डिलीवरी एट ई-कॉमर्स इंडस्ट्री. This is